Good morning, good morning, good morning, all of you. Welcome to Board of Studies classes. And today we are going to start with our advanced accounting paper. First, I will introduce myself. I think many of you have attended already Group 1 sessions from Sanket sir. So I am a faculty for Board of Studies from last 3-4 years. And now we are starting with the advanced accounting. In advanced accounting, first we are going to see the syllabus part. तो syllabus part क्या है हमारा देख लेते हैं. First we are going to start with syllabus. So you are aware about the accounting is a language of business. Yes. And here, first I will introduce why advanced accounting is there. Then we are going to understand what is the syllabus of this accounting standards and advanced accounting overview, and then conclusion. So introduction, very simple introduction. Accounting is one of the core competencies of chartered accountants. Correct? And advanced accounts on financial reporting. Friends, here it is very important. Now we are going to understand accounting standards plus amalgamation and some chapters which are related to corporate and banking and non-banking industry. Okay, so advanced accounts is mainly concerned with accounting standard. Major area is covered in accounting standard, that is a financial reporting part. And students are expected to gain the ability to apply accounting standards to different transactions and events. So transaction and events, you know already we covered at foundation level. What are transaction beta? Any happening is called as transaction, and events are beta results thereof. And understand the disclosure requirements. Okay. So what is the syllabus in this accounting? Okay, advanced accounting का syllabus पहले समझने की कोशिश करेंगे. We have some accounting standards and many accounting standards. How many accounting standards? First one, S4 you have. Contingencies and events occurring after balance sheet date. Then we are going to see S5, that is net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. See beta, this standard is important for your financial statement presentation. So these are financial statements related standards. Next is S7, which is construction contract. So how you are going to do accounting in the books of contractor, that we are going to see it in S7. S9 is revenue recognition. So revenue recognition is beta when to record income, that we have to see here. Okay, 1 minute, beta. Just I will start AC. Then after construction contract revenue recognition के बाद we have to understand next chapter is next accounting standard is accounting for amalgamation. We have a separate chapter. So I'm not going to explain you accounting for amalgamation over here. It will be explained in the chapter accounting for amalgamation. Then we have segment reporting. This is a disclosure standard, how to record your business segment and your operating segments. Okay, so segment reporting. Then related party transactions, S18. S19 is leases and S20 is earning per share. So related party transactions, how to record your all related parties. S19 operating lease and finance lease, we are going to understand over here. Earning per share is a disclosure standard, that is earnings available to equity shareholder divided by number of shares, in which we are going to see diluted EPS and basic EPS. It's very simple standard. It's again a disclosure standard. Then we have S22, that is accounting for taxes on income. And then we have 24 discontinuing operation. So how many accounting standards? We already seen that 9 accounting standard plus this is 10th, discontinuing operation 11, and intangible asset 12. 13th number will be, yes beta, provisions, contingent liabilities and contingent assets. Apart from that, you have S21, which is consolidated financial statements. So you have to understand there are 13 accounting standards. And remember, at least one question from accounting standard for one 4 marks question, your weightage will be 50 marks for accounting standard. So here I won't say exactly 50, but yes, definitely 35 to 40 marks accounting standard weightage. But what you have to do, you have to keep a separate notebook for accounting standard. Remember, separate notebook आपको रखना पड़ेगा. एक accounting standards के लिए बहुत huge है.
some points beta you have to memorize. That memorized points beta I will tell you at the time of accounting standards. So almost 13 accounting standards are there. Small topics. Now let's understand what are small topics. So apart from accounting standard, you have employee stock option plan. That is chapter number 3. I will call it a small chapter because it's very simple chapter, 2 days or 1 day chapter only. Buyback of securities. It's also very easy chapter, beta, buyback. Internal reconstruction. So internal reconstruction, you have to understand this chapter is again small topic bhi bol sakte ho, but हाँ, balance sheet questions are there. So financial statements, if you remember that pro forma of the balance sheet, that we have to do updation after internal reconstruction. तो internal reconstruction के बाद उसका updation करना बहुत जरूरी है. Liquidation, when you are going to बेटा company बंद करनी होगी, so that is called as liquidation. That is chapter number 7. Non-banking financial statements, NBFC, ये भी हमें सीखना है. So how many small chapters are there? Only 5 small chapters. Compulsory question आएगा, only 5 chapters. Big topics में partnership accounts and amalgamation of companies, banking companies and consolidation. Now see beta, suppose if you are giving May 2024 exams, so up to accounting standards, buyback, ESOP you can attend, and after beta amalgamation भी है आपको and consolidation भी है. So you can attend chapter number 5, chapter number 10 if you are preparing for May exam. And November exam beta, don't worry, you do not have any other option. You have to study all these chapters. Okay, so ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, don't worry, तो ये आपको करना ही पड़ेगा. And remember, advanced accounts में exemption लाना is very easy if you focus on study material questions properly and past examination questions of 5-6 papers, because AS में marks मिलते ही मिलते हैं. You can score accounting standards very easily in accounting standards. And see beta, accounting standards will help you not only at foundation intermediate level but also at final level, because your CA final paper financial reporting is based on accounting standards. So don't skip a single unit in the option for accounting standard, though they are boring. Okay, at my style में I will try my best to make it very interesting. And आप सबको good morning बेटा. Yes. बीच के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ है? तो बेटा वो नहीं है आपके ये सिलेबस में, वो आपको एडवांस अकाउंट्स में. यदि आप न्यू कोर्स कर रहे हो तो बेटा आपको बाद में लिए जाएंगे. सो डोंट वरी, ये बात की बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. गुड मॉर्निंग बेटा. केशव, हर्षित, प्राची, कोमल, कीर्ति, राजीव, अमन. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलो से गुड मॉर्निंग जल्दी 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 जल्दी. कमेंट सेक्शन में आ जाओ. दर्शन, आई एम गुड बेटा आफ्टर लॉन्ग टाइम. एंड हो सकता है तो लाइव में अटेंड करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यू विल एंजॉय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अदरवाइज इफ यू डोंट अटेंड इट इन द लाइव सेशन, यू माइट फील वेरी डिफिकल्ट. तो चलो, तो ये ध्यान में रखना. चलिए, सो सिलेबस के बाद बाकी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना नहीं है क्या? से गुड मॉर्निंग इन कमेंट सेक्शन, सो दैट विल शो यूर इंटरेस्ट इन दिस पेपर. हाय बेटा प्रीतेश, गुड मॉर्निंग बेटा. जिया, गुड मॉर्निंग बेटा. तनिष्का, बिभू, गुड मॉर्निंग बेटा. मनीष, गुड मॉर्निंग. यस, तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. हाँ, वेटेज. Weightage first I will explain you. Accounting standard 25 to 30 marks. Partnership 15 to 10 marks का weightage है. Dissolution, piecemeal and amalgamation you have separate chapter. ESOP 5 to 8 marks questions. Buyback 5 marks. Amalgamation बड़ा topic है, 15 marks A category question. Internal reconstruction 10 to 15 marks. So weightage I have given it 5 marks, but it is 10 to 15 marks. लिक्विडेशन 10 मार्क्स, बैंकिंग 10 मार्क्स, एनबीएफसी 5 मार्क्स एंड सीएफएस 15 मार्क्स. सो ये आपके कुछ टॉपिक्स है. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर योर सक्सेस बेटा. वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस बैच यू हैव टू स्टडी एट होम ऑल्सो. ओके, तो जो भी होता है सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो. चलिए, सो
अभी हम लोग शुरू करते, कंक्लूजन पार्ट पे आ जाते फर्स्ट। तो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज आई सेम कैसेट आई एम रिपीटिंग for group 1 students. You are already aware about this. Maintain a separate notebook of 100 pages. 100 pages की book maintain करनी है आपको for your concepts and formulas for revisions. Maintain index of each index of your notebooks and your illustrations of study material. Then practice question. You have to solve it by using टिक-टिकी technique. तो ये कोई दोहराने की बात नहीं है, टिक-टिकी का टेक्निक आपको अप्लाई करना है. And be consistent and results will come to your way. So don't worry, results आपको मिलने वाले. All the best beta, all the best. So now I'm going to start with your actual accounting standard syllabus. So एस की शुरुआत करते हैं. Yes, Madhuri, nice to see you. चलिए, separate notebook. Accounting standard 4 is contingencies and events occurring after balance sheet date. Sir, why this standard? Before starting any standard, I'm going to explain you why this standard is. See, some events takes place after balance sheet date. But you are aware that after balance sheet date, that is the 31st March, first you will audit your accounts. आप लोग क्या करने वाले हो? Audit करोगे आपके accounts का. ठीक है सर? So first we'll do audit. Then beta, balance sheets will be signed by your board of directors. ये जो balance sheet है, कौन sign करेगा? Board of directors. And then AGM will be declared for shareholders. Okay, shareholders के लिए AGM declare की जाएगी. So try to understand, if balance sheet is on 31st of March, you are going to finish your balance sheet. Auditing assume करो 2 months का auditing है, and board of directors ने sign मार दिया 10 जून को, and AGM will be on 30th June. Assume 30th June को AGM है. Normally within 6 months you have to take a AGM after balance sheet date. So here in this period from balance sheet date up to the signing date, I'm telling about board of directors का sign होता है. अरे your financial statements are true and fair, ये उसका sign तो लेना पड़ेगा ना भाई board of directors में, कि whatever information they have provided, based on that we are doing auditing. So board of directors का जो sign है, ये बीच में बेटा कुछ ना कुछ होता है. Something happens between 31st March and 10th up to 10th June. So it might happen that you have a scope to change some figures of balance sheet. Why? Because signing is still not completed. तो signing अभी तक complete हुआ नहीं है, तो आपको कुछ इवेंट्स में या ट्रांजैक्शंस करने के बेटा यहाँ पे क्या होगा, मोहलत दी जाएगी कि 31st मार्च तो 10 जून के अंदर जो भी फिगर्स आते हैं, आप बैलेंस शीट जो आपने फाइनल की है, यू कैन मेक सम चेंजेस. बट सर which events? That we have to understand in the accounting standard 4. तो S4 हमें क्या बताने वाला है? S4 हमें यही सिखाने वाला है. One time in Hindi. Yes. So you understood what is the events occurring after balance sheet date. It is from balance sheet date up to the date of approval. हम लोग अभी इसको एक बार हिंदी में समझ लेते हैं. So you understood events occurring after balance sheet date.
देखो बेटा, 31 मार्च को जो बैलेंस शीट आपकी दी जाती है, तो 31 मार्च को तो बैलेंस शीट तुरंत साइन नहीं करोगे आप लोग। साइन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो तुरंत साइन नहीं करते, पहले 31 मार्च के बाद ऑडिटिंग होगा। ऑडिटिंग होने के बाद क्या होगा, ऑडिटिंग होने के बाद वो बैलेंस शीट को देखा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, फिर वो लोग साइन करेंगे। ओके, अब ये साइन और बैलेंस शीट के बीच में जो भी आपका मसला होगा, जो भी होता है बीच में 31 मार्च से 10 जून तक, यहां पे बेटा जो भी होगा, तो आपको अभी भी बैलेंस शीट के ऊपर साइन नहीं की गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन नहीं की गई है, तो आप लोग अभी भी आपके पास स्कोप है। क्या स्कोप है कि भाई हम लोग ये फिगर्स को चेंज करते, और ये कौन से फिगर्स को चेंज करना है ये हमें सीखना है, क्योंकि हर फिगर को तो चेंज नहीं कर सकते। कौन से है तो आईसीआई, लोग क्या करते थे, मन में आए वैसा करते थे। सो आईसीआई को लगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है, देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, एंड व्हेनेवर देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ इफ यू अटेंडेड माय ग्रुप 1 सेशंस, ग्रुप 1 में हमने ऑलरेडी देखा था कि स्टैंडर्ड्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड सेकंड वन इज डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होता है डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। Sir, disclosure standard means what? You are not going to change figures of assets and liabilities. Assets and liabilities को हम लोग change करेंगे. That is AS. And disclosure is only presentation in the balance sheet or P&L. So this is called as accounting standards or disclosure standard. Sir, open your study material. Open your study material and tell me, S4 ये कौन सा स्टैंडर्ड है? S4 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, S4 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर समझ में आया? बहुत सिंपल है, S4 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर टू स्टैंडर्ड्स, S4B and S5B. S5 का एटलीस्ट थ्योरी पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, ओके? क्योंकि 9 to 10 सेशंस आर देयर इन विच आई हैव टू कंप्लीट 13 स्टैंडर्ड्स, एंड सपोज बीच में कोई संडे मिलता है तो आई विल रिक्वेस्ट ICAI टू गिव मी 2 hours फॉर दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिलेबस इज टू वास्ट। पहले ही बोल देता हूं, एंड सम टाइम वी हैव टू फिनिश 2 days में 1 day 2 स्टैंडर्ड्स। तो बड़े बड़े स्टैंडर्ड होंगे S19, तो इट मे टेक 2.5 hours, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी हैव टू फिनिश इट इन 9 सेशंस, 9 to 10 सेशन, आई डोंट नो एग्जैक्टली। 10 सेशन में हमें एस कंप्लीट करने, एंड आई वांट सिंसियरिटी फ्रॉम योर साइड। सी दिस इज अ बोरिंग पार्ट, बट बेटा आई विल ट्राई माय बेस्ट टू make you very happy for accounting standards as usual। जितना भी हो सकता है मैं आपको खुश करने की कोशिश करूंगा, याद करवाने की कोशिश करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है? So till now any difficulty? So tell me it in comment section what you understood about. Yes, I will read your answer. Let's see how many of you can interpret why there is a need of accounting standard. देखते आप में से कितने प्रतिशत भारतीय हमारे ये बता देंगे। चलो, सो S4 के बारे में बात कीजिए बेटा फटाफट। S4 के बारे में बात कर लीजिए। So this is accounting standard versus disclosure standard. So this is accounting standard. To understand, we have to make some changes in balance sheet. Which changes? Yes, for that you have to wait. हर्षित बोल रहा है इजीली हो जाएगा सर। यस सर, इजीली हो जाएगा, होना तो चाहिए बेटा, बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं। यस, जल्दी से बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किस लिए है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। To being the uniformity in diverse practices of accounting. Beta Himanshu Pathak, very vague answer. I am asking just not why accounting standard. I am asking you why this accounting standard is there. S4. S4 क्यों है रे भाई? अमन ने बता दिया सर, टू डील विद द इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। वेरी गुड बेटा अमन भाई, एक ही लाइन में आपने लिख दिया है to deal with the events which are occurring after balance sheet date.
रोशन ने बोला है if there is a change is required by the circumstances to financial statement, this standard will help you to guide us. Okay, ठीक है, it's okay. Madhav, maintain books of accounts and make easier to financial accounts. Okay. Sir, if there is any event which is occurring after balance sheet date and there is accounts has to be done, so S4 is given for changes in financial statements. Yes. Chaliye. Now let's understand. Yes. So this is the, yeah, what is the expected answer? Expected answer is very simple. Accounting standard 4 deals with some events which are occurring after balance sheet date but before the date of approval, and if you want to make some changes in balance sheet figures, you are going to take help of S4. So S4 will give you which events that you should alter your balance sheet figures. एकदम इजी है, मजा आएगा S4 में बेटा, बहुत सिंपल है S4 एंड फुल मार्क्स देने वाला है जिया बेन, वेरी गुड. चलिए इलस्ट्रेशन 1 पे आते हैं. अरे डायरेक्ट इलस्ट्रेशन, व्हाई? डायरेक्ट इलस्ट्रेशन कहां से स्टार्ट हो गए सर? गलती से हो गया, गलती से हो गया. वेट वेट वेट, हाँ जी हाँ, आ जाइए आपके 100 पेजेस के बुक में. आज S5 भी शुरू होने वाला है, उसके भी मुझे नोट्स लगेंगे. चलिए, so try to understand. What we are going to learn in this AS. So here, contingencies. Contingencies we are going to understand. Events occurring after balance sheet date. So we have to understand the definition of events. Now contingencies means beta reserve for doubtful debts ka question. In new study material, we introduced contingencies question. But in old study material, you do not have that question, and we are going to cover new study material ka question also. I say I may ask you for November exam. Dividend declared after balance sheet date, events which are going to affect going concern, and then disclosures. Please take a screenshot of overview and you can write in 100 pages book. What you can do from beginning, you can read, you can write the theory, and from the end, you can write the practical questions based on the accounting standard. तो पीछे से illustrations लिखना, आगे से theory लिखना, ठीक है? First standard है, तो I am going to take, I am giving you theory in writing. Just note down it, first standard है, but next time I will tell you to take screenshots of these pages. It will save time and we will focus maximum on practical questions. Okay, practical questions pe, yes, you only tell me from S4, should I give it in the writing or should I save your time? You will write it later in your notebook and we will focus on illustration parts. So you tell me, or you want everything in writing?
Everything in writing is really very difficult because I have to finish in 9 days. Yes. आपको मेरे ग्रुप 1 के साथ जो एस हुए थे वो आपको इंटरेस्टिंग लगे थे बेटा? चलो जल्दी से बताओ मुझे. स्क्रीनशॉट्स लेके लिखोगे, बट बेटा डेली यू हैव टू सिट फॉर 1 hour, 1 hour फॉर योर होमवर्क, एंड आवर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन थर्सडे. सो थर्सडे को हमारा सेशन होगा. सेव द टाइम, फोकस ऑन इलस्ट्रेशंस. यस, we'll take screenshots, we'll take screenshots. Everyone is saying we will take screenshots. देखो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरेस्टिंग करना मेरा काम है. इट्स माय जॉब. सर ऑलरेडी all over India के students, they are finding accounting standards are very difficult one. Some standard they found it very easy, but they are not, creating interest. And AS सिखाना faculty के लिए भी very difficult, because AS is not a joke बेटा. AS जो है वो बहुत दिमाग लगता है उसको बनाने के लिए भी. और यस, आपको पूरा का पूरा सेशन ये मैं कॉन्सेप्ट्स कवर करके दूंगा. यस, सो व्हाट इज द ओवरव्यू? सो फर्स्ट स्क्रीनशॉट बेटा, यस मैं स्क्रीनशॉट्स नंबर्स लिखता हूं. सो 1, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीनशॉट दैट यू हैव टू टेक. Contingencies, this is the overview you have to write. Madhuri बोल रहे हैं, I'm watching your sessions from foundation. Many students बेटा they are attending it from the foundation. राजू कुमार बोल रहा है Group 1S learning was very interesting and easy from your teaching. Okay, ठीक है. So फर्स्ट स्क्रीनशॉट है ओवरव्यू का. चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट स्क्रीनशॉट, contingencies. Actually, I have uploaded notes, but in notebook also you have to write something. In notebook, and if you are not writing, बेटा आप सीखोगे नहीं. लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं. Contingency is a condition or situation. ध्यान देना, contingency is a condition or situation, the ultimate outcome of which, whether gain or loss, it may be a profit, it may be a loss, will be known or determined only on occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Sir, example. See, if you want to learn the definition, you always break the definition. ये break करना बहुत जरूरी है. Example, provision for doubtful debts. This is only the example in this standard. बस contingency इसी के लिए बना हुआ है. Contingent liability is different. I am not talking about contingent liability. S29 will take care of. Here it talks about contingencies. Contingencies. Remember. Now what is contingencies? Yes, ratta maar definition. Contingency is a condition. By heart the definition. By heart the definition. Memorize the definition. Contingencies or situations. It's a condition or situations, the ultimate outcome of which,
वेदर गेन और लॉस, राइट डाउन ओवरव्यू के लिए हाफ पेज छोड़ दो, सॉरी डेफिनेशन एक पेज छोड़ दो पहला फॉर ओवरव्यू एंड देन फर्स्ट पेज कंटिंजेंसी. एटलीस्ट डेफिनेशन यू राइट इट, डेफिनेशन मेरे साथ लिखो बस, बाकी कुछ नहीं. एंड टेल मी ओवर, उसके बाद बताओ ओवर करके. यस, ब्रेक दिस डेफिनेशन लाइक what I have given on the screen. You can see it. Contingency is a condition or situation. याद करो. The ultimate outcome of which, ultimate outcome, condition or situation, that is a provision for bad debts. Ultimate outcome, collection, might be less collection, gain or loss, will be known or determined only on occurrence, मतलब वो पैसा देगा या नहीं देगा, और नॉन ऑकरेंस of one or more uncertain future events. Over? Yes. रट्टामार डेफिनेशन है. डन. याद हो गया सबको? बाय हार्ट हो गया बेटा डेफिनेशन? वेरी सिंपल. Now what is contingent losses? Contingent losses. See, as per prudence concept, anticipated losses should be accounted for. Thus, if it's likely that contingencies will result in a loss, then it's prudent to provide the loss in the financial statements. Contingent losses, do not write this. As per prudence, prudence concept क्या बोलता है? Anticipated losses always should be accounted for, even though they result in loss, but you will record it in your financial statements. So contingent losses वही बोलता है. So you are aware about this कि contingent means future में loss होगा. आज ही बुक करना है, हाँ करना है. You have to account it for. Contingent gains, not record. Don't record contingent gains. Contingent gains are not recognized since it may be result in recognition of gains which may not even realize. तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. Contingent gains and all, do not write this. Only you have to write the definition of contingencies. बस standard का first part is over, खत्म. And what it talks about, don't record provision for creditors, always record for provision for debtors, doubtful debts, provision for doubtful debts. Okay, so this is a definition of contingencies in which you need to write this definition in exam if they ask you the question of S4. Okay, contingencies, provision for doubtful debts का question आया तो आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों. मजा आया बेटा? अभी तक तो कुछ डिफिकल्ट हुआ ही नहीं है. So first part is completed. Over of this accounting standard. Now what we are going to see, events occurring after balance sheet date. अभी हम लोग देखेंगे events occurring after balance sheet date, what it talks about. Events occurring after balance sheet date. See beta, events occurring after balance sheet date means these are significant events. Sir, significant, important, not important, immaterial, don't record it for. Highlight the word significant event. See, red pen जहां जहां use किया है, you have to write it by red pen. मैंने जहां जहां highlight किया हुआ है. When you are taking screenshots or when you are writing it, beta, this definition you have to write it in your notebook. चलो लिखो, events occurring after balance sheet date. Events occurring after balance sheet date. Nowadays, what happened, beta? You know,
when you come to intermediate level na, for intermediate level and in second group, why you are getting failure results? Reason is very simple. At foundation level, you listen to Sanket sir's each and every word. At inter level, what happens in group 1? You listen to each and every word, but what happens? Paper becomes very difficult nowadays. पेपर डिफिकल्ट आते हैं, और पेपर डिफिकल्ट आने के बाद क्या होता है? आप लोगों का भरोसा थोड़ा बहुत उड़ जाता है, सर पेपर तो डिफिकल्ट आने वाले हैं। फिर आप क्या करते हो? इधर उधर के लेक्चर्स देखते हो, वापस से कुछ नई चीजें करते हो। डोंट डू दिस। सी, वन फेल्योर रिजल्ट इट डजंट मीन कि आप लोग लाइफ में फेल हो गए। But what happens nowadays, accounts paper is really very, very tough, first paper. But if you ask me, advanced account paper is same copy paste of study material. और आप लोग क्या करते हो? स्टडी मटेरियल रीड करना ही छोड़ देते हो फिर। और वैसे भी सेकंड ग्रुप में आने के बाद ये दो आ जाते हैं ना हमें, हाँ, तो वो क्या हो जाता है? ये आपको फेल्यूर के टूवर्ड्स लेके जाता है। बट यदि आप सीरियसली एडवांस अकाउंट्स करोगे कंसिस्टेंटली, याद करो आपके फाउंडेशन के दिन कितने कंसिस्टेंट थे आप लोग, वही स्टूडेंट्स फाउंडेशन में, दोज हु अटेंडेड माय सेशंस, जो भी संकेत सर बोलते थे आप सुनते थे। पर अभी क्या हो जाता है सर? एक तो लेक्चर्स भी कम रहते, आई कैन टेल यू, यस, बट बेटा शॉर्ट लेक्चर भी है ना, क्योंकि सीए में इंटर में you have to understand, you have to do self study also. Now it's not spoon feeding like foundation. Many students inter में they get flung, and after that what happens कि ये इधर का मटेरियल देखो, यहाँ का मटेरियल देखो। Don't do these things, stick to your basics. एक पेपर डिफिकल्ट गया, इट डजंट मीन कि आपके हमेशा पेपर डिफिकल्ट जाएंगे। पर सेकंड ग्रुप में इफ यू आर सिंसियर अबाउट योर स्टडी, यू आर नॉट गोइंग टू फेल। ये भी ध्यान में रखो, नहीं होने वाले हो फेल। नाउ यू डिसाइड। ओके, इसके बाद मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको क्या करना है। यू ओनली थिंक कि मुझे एडवांस में सीरियस रहना है या नहीं रहना है। आई विल अटेंड इट इन लाइव और आई विल अटेंड इट इन रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में बोर हो जाओगे, क्योंकि लाइव में यू कैन शेयर विथ मी, योर कमेंट्स कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यू डू नॉट हैव ऑप्शन तो यू गो फॉर रिकॉर्डिंग्स, बट ट्राई टू अटेंड मैक्सिमम लेक्चर्स इन लाइव वन सो यू कैन इंटरेक्ट विथ मी। चलिए, those are significant events, remember, that might be favorable, मतलब आपके साइड से, और इनफेवरेबल। रट्टा मार डेफिनेशन है, इट्स अनफेवरेबल, that occur between balance sheet date and up to the date of approval of financial statements. Write down this definition. याद करो, significant events, favorable, unfavorable, occurred between balance sheet date and date of approval of financial statements. Over. Tell me over after writing these events. Those are significant events, favorable and unfavorable, that occur between balance sheet date and date of approval of financial statements.
Over. Now significant events are divided in two parts. Significant events are divided in two parts, adjusting and non-adjusting. Adjusting means, now this is also रट्टा मार definition. Side में लिखो by heart करके. So पिछला definition भी by heart था. Assets and liabilities should be adjusted for events occurring after balance sheet date, providing additional evidence relating to conditions existing on balance sheet date. Additional evidence. Additional evidence. Conditions existing. Red pen. Conditions existing. So definition of adjusting is very simple. Assets and liabilities should be adjusted for events occurring after balance sheet date, providing additional evidence relating to conditions existing on balance sheet date. याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है डेफिनेशन. Simple definition, simple marks. Yes, very good Harshit. Harshit को रट गए पूरी definition. And write down adjusting over. After writing this, write down adjusting over. Adjusting events. I will give you a break of 15 minutes at 8:15 to 8:20. Till that time, beta, focus. ऑप्शन नहीं है हमारे पास. एस है. मजा तो आने वाला है सर एस में, यदि हमने याद कर लिया तो. पूरा एडजस्टिंग इवेंट्स याद करो. Assets and liabilities should be adjusted for events occurring after balance sheet date, providing additional evidence relating to conditions existing on balance sheet date. Relating to conditions which are existing on balance sheet date. Do not forget by heart this definition. आपको definition याद करनी पड़ेगी. Non-adjusting events. Sir, what about non-adjusting events? जल्दी बताओ. Non-adjusting events क्या है sir? Events which are indicative of conditions that arouse subsequent to the balance sheet date. Sir, ये events आते हैं, but after balance sheet date आते हैं. After balance sheet date. Yes. मतलब ये हुआ कांड. Significant event. But conditions are not existing on the balance sheet date. Here conditions are existing on balance sheet date. Sir, example दूंगा तो समझ में आएगा. First write down the definition. Example द्वारा समझ में आने वाला है. Many examples we have to see. Here, change in your assets and liabilities. Here, not existing. Do not change. Only disclosure. Only disclosure. No change in simple language. So you can write it in the margin. Adjusting event, conditions existing, and second comma देके लिखो assets and liabilities altered. Layman language में, third person के language में, simple language. But I say I won't give you marks for this layman language. Non-adjusting, conditions not existing, disclosure. Okay, sir. Conditions existing on the balance sheet date and changes in assets and liabilities. ऊपर margin में लिखो.
एंड राइटिंग ओवर ऐसा लिख देना, राइटिंग ओवर, आफ्टर राइटिंग, यस, राइट डाउन राइटिंग ओवर, जो भी दिख रहा है वो रट्टा मार है। यस बेटा हर्षित, वेरी गुड। एडजस्टिंग ओवर के बाद लिखना राइटिंग ओवर, तो आई विल अंडरस्टैंड यू हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स। मजा आ गया सर, स्टैंडर्ड में मजा आ गया, और स्टैंडर्ड खत्म भी हो गया, कुछ था ही नहीं, बताने जैसा कुछ था ही नहीं। 10-12 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन देख लेंगे, स्टैंडर्ड खत्म। यस, conditions which arose after balance sheet date, non-adjusting. Conditions existing on the balance sheet date, adjusting. Just recall these words and this standard gets over. Only 2 concepts are remaining in this standard. कुछ था ही नहीं सर, क्या करेंगे, इतना सिंपल स्टैंडर्ड है। ठीक है, मुझे तो मजा आ जाता है, ये स्टैंडर्ड में सिखाने जैसा कुछ है ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है यहाँ पे। क्या करना है, सिग्निफिकेंट इवेंट है, पहले तो चेक करना पड़ता है वेदर दिस कंडीशंस आर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। पहले तो देखना पड़ेगा वेदर इट इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। व्हाई, बिकॉज 31 मार्च से डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में होगा तो होगा ना कांड ये सब। तो ये बड़ा 31 मार्च टू डेट ऑफ अप्रूवल तक होना चाहिए। आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, then we have to find out this is event occurring after balance sheet date है तो फिर देखना पड़ेगा adjusting और non adjusting। adjusting क्या होगा, conditions are existing on the balance sheet date, non adjusting conditions are not existing on the balance sheet date, and then change your assets and liabilities in case of adjusting। नाम में छुपा हुआ है ना adjust, what do you have to adjust, assets and liabilities। non adjusting don't adjust, disclose, simple, easy है। अरे इजी है क्या, अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या स्टैंडर्ड, जस्ट यस और नो तो बोलो। ऐसा फटाफट याद कर लेने का बेटा, फटाफट। फिनिश्ड, हाँ बेटा स्टैंडर्ड ओवर। अभी क्वेश्चन देखने, चेक करना है वेदर इट इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, फिर चेक करना है कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, हाँ कर रही थी तो दिस इज एडजस्टिंग, नहीं कर रही थी नॉन एडजस्टिंग, खत्म। हिमांशु भाई को धक्का बैठ गया, सो ओवर। यही एक स्टैंडर्ड है जो जल्दी समझ जाएगा। ये तो ऑलरेडी दिख दिया था, डिस्क्लोजर है। एक तो सुबह सुबह सर आपके साथ उठो, 7 बजे उठने के बाद आपके लेक्चर्स को अटेंड करो, लेक्चर अटेंड करने के बाद वो भी क्या सर, राइटिंग कुछ नहीं, एस की शुरुआत कर दी, कोई बात नहीं, एस की शुरुआत हो गई, ठीक है। पर ग्रुप 2 में हम लोग है ना स्ट्रांग बन चुके, एस की आदत लग गई हम लोगों को ग्रुप 1 से ही, कोई दिक्कत नहीं है, एस से शुरुआत हुई तो भी। डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अब ये क्या है सर जी, आपने डिविडेंड यू हैव डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, नाउ व्हाट इज दिस, थर्ड कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड। स्क्रीनशॉट 2 लेने की टाइम आ चुका है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट। डिविडेंड which are declared after balance sheet date, but remember before the financial statements are approved, before balance sheet, after balance sheet but before financial statements are approved, this is exception। sir dividend to profit mein se diya, profit is existing on the balance sheet date, so should I record this as adjusting event, I have to make a provision, no, this is exception। dividend
if it is declared after balance sheet date, but before financial statements are approved, are not recorded as liability because no obligation exists on balance sheet date. But when I studied this part in my CA final level, so this dividend we were recording in financial statements. हम लोग इसकी प्रोविजन करते थे, पर बेटा S4 के बाद ये प्रोविजन निकल गई है. इट इज रिमूव्ड एंड यू कैन सी इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर इन ग्रुप 1 you never provided proposed dividend. You have written a note. He dividend is declared at this rate, but you have never provided dividend. Provision for dividend की entry, proposed dividend की entry, we never passed because of this. S4 के वजह से हमने कभी भी पास नहीं किया. ध्यान रखना. ओके, ध्यान रखना ये. We never recorded dividend because there is no obligation. No obligation. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आजकल नहीं आएगा पर आ सकता है कि डिविडेंड का क्या करना है. You just have to write it in disclosure, disclosed. बस रेड पेन. स्क्रीनशॉट 2. SS2 बोला तो संकेत सर 2 हो जाएगा. ले लीजिए स्क्रीनशॉट 2. नो ऑब्लिगेशन रेड पेन, डिस्क्लोज रेड पेन. यस बेटा कृति जी, थैंक यू. चलो स्क्रीनशॉट 2 ओवर. Events affecting going concern. Now this is also a favorite question. Events affecting going concern. Remember friends, events affecting going concern assumption. Events which may indicate that enterprise may cease to exist. Oh, ऐसे events which occurred after balance sheet date. Major fire occurred and your enterprise is not going to survive. Your going concern assumption is affecting. Your business will get shut down. तो बेटा in that case a depreciation, financial position or unusual sub changes if affects the existence or substratum. बेटा ये लाइन लिखना है. Existence affects the existence or substratum of the enterprise after balance sheet date, then you have to prepare your financial statements on liquidation. मतलब net realizable value, historical cost. No. Going concern affects. Group 1 के पेपर में हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन. Your financial statements you are going to provide it on liquidation basis. Screenshot 3. Now screenshot 3. याद करना. No Rattamar points, but you have to write this point in your 100 pages book. And tomorrow, next session में, I will show you some notebooks जिसमें बच्चों ने ये लिखा हुआ है, where they have written this.
इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है? चलो. So here, last part, disclosure. Disclosure means end of the standard. Disclosure. Substratum मतलब existence. Substratum means existence. वो फर्म बचेगी नहीं, कंपनी बचेगी नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं. द नेचर ऑफ इवेंट, whether adjusting or non-adjusting, and estimate the financial effect, or statement that estimate cannot be made. Oh, good or bad? क्या लगता है आपको? I am giving you 3 minutes. Whatever you understood in the standard, write down it in comment section. मैं आपके comments पढ़ूंगा. What is events? What is adjusting? What is non-adjusting? In simple language. I want in simple language. Okay. Don't use this dangerous language of, ICI material. ठीक है? जो भी समझा, हिंदी, इंग्लिश, both are preferable. गुजराती, no. मराठी, yes. Yes. बाकी, no language. चलो. Write down. I'm waiting for your answer. I'm giving you 5 minutes का time. Whatever you understood, write it in the comment section. जो भी समझा वो लिखो, लिखो, लिखो. कोबलबेन. After this 5 minutes, very interesting session. All illustrations we are going to start with. बेटा कितनी भी नींद आई तो भी नींद पे कंट्रोल करना है. रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है.
यस, मेनी ऑफ यू हैव रिटन दिस एस का पूरा वर्किंग। चलो क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। मनीषा, S4 is an accounting standard. Contingencies refer to the situation which is unknown or not determinable in the balance sheet, but which may affect the future profit or losses. Events occur after the balance sheet date are those significant events which occurs between balance sheet date and date of approval. Significant events are two types: adjusting events after balance sheet but conditions present on balance sheet date, and non-adjusting events after balance sheet date and no conditions were present on balance sheet date. Very good. मनीषा का आंसर सबसे मस्त था। डिविडेंड डिक्लेयर भी लिखा है मनीषा ने। बाकी भी बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बट मैंने जो रीड किया और मुझे जो सबसे सही लगा, यस, कृति ने भी बहुत अच्छे से लिखा है। वेरी गुड कृति। बहुत जरूरी था कि स्टैंडर्ड को पूरा समझ के लेना। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ योर स्टडी मटेरियल। ओपन योर स्टडी मटेरियल। जल्दी से आपका स्टडी मटेरियल ओपन कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं और ब्रेक दूंगा मैं आफ्टर इलस्ट्रेशंस। गर्म पानी होता है। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, स्टैंडर्ड्स में रुचि मेंटेन करते रहो। मैं भी एंजॉय करूंगा स्टैंडर्ड्स आपके साथ साथ, बिकॉज फ्यूचर इज स्टैंडर्ड्स, न्यू कोर्स इज स्टैंडर्ड्स, FR इज स्टैंडर्ड्स। जो भी है वो स्टैंडर्ड्स है। बेटा छोटे स्टैंडर्ड हो गए तो काय को दिन वेस्ट करने के ना। अमन, अमन बोल रहा है S5 आज ही खत्म। आज नहीं खत्म होगा, आज तो थ्योरी खत्म हो गई अमन, पूरा तो नहीं खत्म करेंगे। मुझे भी समझ में आता है, फर्स्ट डे सर आने के बाद पहले ही बॉल पे सिक्सर। अरे बाबा रुको रुको, सबर करो। स्टडी मटेरियल में आ जाओ, इलू 1 में आ जाओ। फिर इंडेक्स भी बना के देता हूँ इलू 1 का, हाउ टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए, इलू 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 1, ये स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया, इसको तो बाय बाय कर देते। चलो आप तो चले जाइए, आपका काम खत्म, आपका भी काम खत्म। आपका भी काम खत्म। आपका भी काम खत्म। पहला क्वेश्चन है आपके स्टैंडर्ड का। ओपन योर स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 1.7। पेज नंबर है 1.7।
यस, वेरी गुड। दीक्षिता ने लिखा, श्रेया ने लिखा है, जसप्रीत ने लिखा है, मनीषा ने तो लिखा ही था, रोशन ने बहुत बढ़िया लिखा है, जिया ने लिखा है, कृति ने लिखा है, दिवेश भाऊ ने लिखा है, हिमांशु, वेरी गुड। संस्करण जी, संस्करण जी कैसे हो, बहुत दिनों के बाद। माधुरी है, चलो बहुत बढ़िया। यस, ब्रेक को जाने के पहले हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके एटलीस्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक। उसके बाद ब्रेक के आने के बाद हम लोग करेंगे थ्योरी S5 की, और 3 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क में दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप S4 से भी जुड़े रहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या था, जल्दी से देखो। इन एक्स कंपनी थेफ्ट ऑफ कैश 5 lakhs by the cashier in January 2001. What it means, January 2001 को was detected only in May 2001. The books are not yet approved by the board of directors. Decide whether their theft has been adjusted in the accounts of the company for the year ended 31st March 2001. You have to write these answers today itself. But from last page to first page, इलू 1. इलू 1 क्या था? थेफ्ट ऑफ कैश इन जनवरी 2001. सीधा आंसर, जनवरी 2001 था. It means, what it means? Yes, conditions, write down. Conditions existing on balance sheet date. Conditions are existing on balance sheet date. But detected in May, events occurring after balance sheet date. Events occurring after balance sheet date, but before approval ना, not yet approved. जो भी मैं अंडरलाइन करता हूं वो आप भी करोगे. Decide whether theft, क्या लगता है आपको आंसर? Don't refer the answer. It's adjusting or non-adjusting. Write down in comment section. It's adjusting or non-adjusting. अरे बाप रे, बाईपास सर्जरी ऑफ संकरण जी. यस, ठीक है, इट्स ओके. गोइंग फॉर नवंबर. So how to write the answer, sir? How to write the answer? Facts of the case. In the given case, theft of cash of rupees 5 lakhs by the cashier in January 2001. It was detected in May 17. Sorry, गलत हो गया, डेट गलत हो गया. May 1. डेट गलत हो गया है भाई साहब. In 2001, the accounts of the company were not yet approved by the board of directors of the company. याद रखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है. फैक्ट्स आर वेरी सिंपल. प्रोविजंस, you have to write the definition as per S4 in inverted comma. Contingencies and events are in after balance sheet date, ये तो याद रह जाएगा. एक लाइन तो वैसे भी भर दिया आपने. Assets and liabilities are to be required to be adjusted, are required to be adjusted. सर adjusting event का वही explain करना है. adjusting event का definition for events occurring after the balance sheet date, if such event provides further evidence, additional evidence to the conditions existing on the balance sheet date. See red pen. रेड पेन मतलब याद रखने का तरीका है. एडजस्टेड, फर्दर एविडेंस एंड एग्जिस्टिंग, 3 वर्ड्स आने ही चाहिए. द बैलेंस शीट डेट नहीं आया
तो मतलब याद नहीं, वो तो आ ही जाएगा, ये वर्ड्स आने चाहिए। सर, सर, अभी स्क्रीनशॉट शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। स्क्रीनशॉट 4 था ये। आज लिखना है, बहुत होमवर्क है सर आज। आज हमें लिखना है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ये याद रखना। आज पूरा लिखना पड़ेगा। यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज आंसर्स, इट विल boost your confidence and practice. And while writing the answer, please make sure you are not copying it, but you are memorizing it. चलिए, so facts over, provisions over, confusion, अरे conclusion not confusion, हाँ. Thus, as per the facts, theft was detected after balance sheet date, but it is additional information which affecting, this is a significant, the determination of cash amount relating to conditions existing on the balance sheet date. So it is necessary to make the adjustment for the year. Recognize this loss, embezzlement, make a provision in your book. What is the entry that you are going to pass? To cash in hand and loss, embezzlement of cash. मतलब it's a loss account debit or loss by theft account debit to cash in hand. Entry only for understanding. Entry क्या करोगे? Loss by theft or embezzlement of cash to cash. Cash goes out. Don't write entry in exam. Huh? Entry is not asked. Entry karoge, but it is not asked. Yes, Bibbo. Very good. Yes. Screenshot 5. 5 नंबर का स्क्रीनशॉट चल रहा है. इजी चे बेटा, प्रॉमिस ना लिखोगे? यस, प्रॉमिस ना पूरा लिखोगे? डोंट बेटा, मेरी मेहनत मत वेस्ट जाने देना, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है एवरीथिंग. आई नो एस पढ़ाना कितना मुश्किल है, एंड टू retain your attention is very difficult in accounting standards. तो प्लीज 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 मुझे आपके 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद का 2 hours आई नीड एक्स्ट्रा फॉर योर होमवर्क. प्रॉमिस ना? पक्का वाला प्रॉमिस ना? यस. चलो, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी. क्या देखो, मैंने पूरा फैक्ट्स वगैरह कितना अच्छे से लिख के दिया हुआ है. इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम. ये इजी नहीं है. एक एक एडजस्टमेंट, रेड पेन, सब प्रोविजन दिमाग में लगा के करना पड़ता है. मेहनत है इतने सालों की. Ilu 2. Earthquake destroyed a major warehouse. Oh, on 20th 5 2002. The accounting year ends on 31st March. No condition on balance sheet date. बेटा, this is no condition. अर्थक्वेक आने वाला था, ये हमें पता नहीं था. अर्थक्वेक आएगा, ये हमें पता नहीं था. So whether this is adjusting or non-adjusting, non-adjusting. But wait. Due to this earthquake, it might happen that your business may get disturbed. So facts देखो क्या है. This is IMP question. This is not only non-adjusting. Many students, they made mistake. They don't understand how to write the answer in exam. They just write, sir, non-adjusting event, not allowed. Okay, ऐसा कर नहीं सकते, ये ध्यान में रखो. सिर्फ इतना नहीं लिखना है. You have to write it बेटा properly. With reasons you have to write. Okay, facts of the case. In the given case, earthquake destroyed a major warehouse. ठीक है, मेजर वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हुआ.
ठीक है. So here the accounting year ends on 31st of March. The accounts were approved on 30th September, 30th June. Loss 30 lakhs. Provision. Pehla definition. No adjustment is required to made to the assets and liabilities if events occurs after balance sheet date does not relate to conditions existing. No conditions existing. But ये IMP है. ये भी रेफरेंस देना पड़ेगा. ये रेफरेंस तो जरूरी है. However, unusual changes affecting the existence of the enterprise. सर ये तो लिखना पड़ेगा सर. Unusual changes affecting the existence of the enterprise after balance sheet date may indicate need to consider use of fundamental accounting assumption of going concern in preparation of financial statements. याद रखो. Unusual change. Unusual change. If it is existence affect हो रहा है, तो we have to prepare it on liquidation basis. You have to check your fundamental assumption. Screenshot 6. Screenshot 6. बहुत लिखना है सर आज तो बहुत लिखना है. मजा आ जाएगा. ओके. स्क्रीनशॉट 7. यस, थोड़ा और स्मॉल कर सकते हो. थैंक यू जसप्रीत. डेट चेंज है उतना कर लो बेटा. फिर वेरी गुड प्रीतेश. हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बेटा आंसर्स दे रही है. स्क्रीनशॉट 7. आई नो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स हेवी है. So loss is not to be recognized as it did not exist on the balance sheet date. SS8, screenshot 8. The earthquake has caused major destruction. Red pen वाला में red pen से लिखना. Therefore, going concern is called upon. Okay. Sorry. Now you take this screenshot. Jasprit बोल रहे your presentation is good. What do you think? Is easy? Facts of the case, analysis, conclusion. चलिए. One more question. Number three. LU3. A company has filed a legal suit against a debtor from which 15 lakhs is recoverable as on 31st March 2001. The chances of recovery by way of legal suit are not good as per legal opinion by the council in the April 2001.
Can company provide full amount of 15 lakhs as a provision for doubtful debts? Debtor 15 lakhs and filed a suit. So conditions existing on BST. Debtor already beta we filed a suit against him. If no suit against him, then beta it is non-adjusting. But we already know this debtor is not going to pay me. Therefore, you only tell me what is this event. ILU 3 answer. ILU 3 का आंसर. चलो बोलिए. Yes, betas. Sayani ji, Malkar ji, your questions are visible to me. Don't worry. Practice only writing की करनी पड़ती है. So this is adjusting or non-adjusting. है बेटा जल्दी से कमेंट दो ना. सो गए क्या? सोना मना है. Contingency नहीं है ये, adjusting event है. Don't define contingencies. You can beta cut down facts हाँ बेटा. जरूरी नहीं कि same facts you have to write. Okay. So in the given case, a company has filed a suit against debtor. If you don't write these facts also in simple way, you can write it. The chances of recovery by way of legal suits are not so good as per the legal opinion. Then provisions. As per S4. Screenshot number क्या है 9 पे है ना. Adjusting का definition. SS ना यार भूल गया मैं. 9. Screenshot 9. Same. But once you understand ना कि this definition अपने आप याद हो जाएगा. This definition you are writing it for second time. Provisions, conditions, existing. ILU 1 का भी adjusting था, ILU 3 का भी adjusting है. So confusion. Company should make the provision for doubtful debts as a legal suit has been filed on 31st March 17 and chances of recovery from the suit are not good. Though the actual results of a legal suit will be known in the future, yet situation of non-recovery from the debtors exists before finalization of the financial statement. Therefore, provision has to be made. SS 10, screenshot 10. बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स. आज तो एंजॉय कर रहे हो आप लोग. आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर रहे हो बेटा. मजे ले रहे हो आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फुल. पूरा ध्यान में आ गया. 4 मार्क ले लिए बेटा आप लोगों ने. चलो लास्ट इलस्ट्रेशन बिफोर ब्रेक. लास्ट इलस्ट्रेशन. In preparing the financial statements of R Limited for the year ended, see the question. State with the reason how would you deal with. The company invested 100 lakhs in April 2001. Before approval of these statements by board of directors of the acquisition of another company doing the similar business, the negotiations for which had started during the year. Tell me. Don't read the answer. Apply logic and tell me. Tell me the answer. क्या लगता है आपको? डेट इनकरेक्ट है क्या मेरे इसमें? ठीक है, डेट्स को थोड़ा याद कर लो.
डेट्स मेरे इसमें गलत है। वाह जसप्रीत, एस मीन्स एसएस, ऐसा कुछ नहीं बेटा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज आपको नॉलेज देते हैं, डोंट वरी। मैं सिर्फ थिंकिंग करता हूँ कि स्टूडेंट को सिंपल कैसे किया जाए। चलिए, इसका आंसर है facts of the case. In the given case, R Limited invested 100 lakhs in April 2001. The negotiations are already started in negotiations just started. Provision: if the events do not affect the figures stated in the financial statement, such events would not require disclosure. There may be of such significance that they required to be disclosed in approving authority to understand. सी बेटा गूगली था, आईएमपी, ये प्रोविजन पूरा गूगली था। You have to write this definition. If they do not affect the figures stated in the financial statement, then beta such events would not require disclosure. So this is the pure googly question था। नॉन एडजस्टिंग भी नहीं लिखना था आपको, नॉन एडजस्टिंग भी नहीं लिखना था। It does not require disclosure at all. If it is significance, then only you will record it. So ये आंसर जरूरी था। I think screenshot number screenshot 11. Yes, पूरा गूगली क्वेश्चन था। आप लोग लिख सकते हो नॉट अकाउंट्स रिपोर्ट में, बट आपको इंफॉर्मेशन देना है तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पूरा गूगली कर दिया। SS12 स्क्रीनशॉट 12। यस, अभी तक फाइनलाइज भी नहीं हुआ है, निगोशिएशन स्टेज में था अप्रैल में, और ये बिजनेस को अफेक्ट भी नहीं कर रहा है। फिगर्स ऑफ 2001 2001 तो आपको लिखना ही है, तो डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख दीजिए। यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में लिखो, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, नॉट अपने एनुअल रिपोर्ट में। सी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एनुअल रिपोर्ट, ये याद रखना, ठीक है? समझे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन गूगली था, ये क्वेश्चन गूगली था। डोंट रिकॉर्ड एज नॉन एडजस्टिंग, दिस इज नॉट इवेंट ऑफ बैलेंस शीट का, दिस इज नॉट इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। व्हाई? बिकॉज इट इज transaction and it is significant, therefore we are disclosing it in director's report, not in our annual report. सिंपल चल रहा है यार, ठीक है? यस, ये 2001 मतलब नेक्स्ट ईयर में चला गया, और हम लोग बना रहे 31 मार्च 2000 मतलब 001, और ये चला गया नेक्स्ट ईयर में 12। ओके, चलो मनीष भाई ब्रेक ले लो।
Guys, we have completed S4 in first half. Now, beta, we are going to start with, because now it's very important. Today, I'm not going to take any illustration of S5. I just want to clear your concepts, and if time permits, we will solve remaining illustrations at the end. Otherwise, we will take it in the next session. You will go through all remaining, illustrations of study material of S4. And if time permits, we will finish it. अभी आज मैं इसका पूरा स्टैंडर्ड नहीं लेने वाला हूं. आई एम गोइंग टू टेक हाफ ऑफ दिस स्टैंडर्ड, only half of S5. Now this standard is also impacts your financial statements. किसको impact करता है? First, this is a disclosure standard. This is your disclosure standard. Why, sir, disclosure standard? Yes. इसको disclosure standard क्यों बोलना है? And why this standard? First, ask to yourself, sir, are you going to take 2 standards in one day? Beta, normally not. But S4 is really very simple. So I have taken S4 and 5 together. Because S4 में कुछ दम ही नहीं था बेटा. कुछ दम था क्या? आप ही मुझे बताओ. आपको लगा क्या कि S4 बहुत डिफिकल्ट था? यस, ऐसा लगा आपको किधर भी? क्या करूं ना बीर, इसलिए S5 ले लिया आज साथ में. नेक्स्ट टाइम बेटा एक ही स्टैंडर्ड हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज 7 बड़ा स्टैंडर्ड है, एक ही होगा. नेक्स्ट टाइम का स्टैंडर्ड है S7, उसके बाद 9. और इस बार बेटा संडे को भी शायद से आपका सेशन रहेगा. आई डोंट नो, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे. ठीक है, एक बार चेक कर लूंगा मैं. ओके, चलो अभी, अरे आ गए क्या सब लोग? वेलकम बैक, वेलकम बैक. चलो बोलो जल्दी जल्दी, आ गए क्या आप लोग? हाँ, सो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के बारे में बात कर लेते हैं. रिमेनिंग क्वेश्चंस यू कैन डू बाय योर ओन. We are going to discuss it, but I want every one of you will first think what is the facts of the case, what is the provision of AS, and then we will see the conclusion part. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के बारे में बात करना होगा तो it talks about net profit or loss for the period. I'm not going to explain you remaining part of the standard. This standard actually divided in 3 parts. Part 1, net profit or loss for the period. How your P&L should be different from some activities, and which activities that we have to understand. कि P&L कैसे डिवाइड किया जाएगा. Prior period items. Part 2 is prior period items, and changes in accounting policies is part 3. Part 3 is changes in accounting policies, and we have to also understand what is estimate change. Net profit or loss, prior period items, and changes in accounting policies. In today's session, I'm just going to explain you what is net profit or loss for the period. मैं आज आपको इतना ही सिखाऊंगा, net profit or loss for the period, and if time permits, prior period items. Prior period items. ठीक है, देखो स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, ये भी S4 से थोड़ा बड़ा होगा, बट दिस इज अगेन 100% स्कोरिंग स्टैंडर्ड. इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्टैंडर्ड मुश्किल है. नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड बहुत ही इजी है. ओके, चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं.
net profit or loss, extraordinary items, profit or loss from ordinary items, prior period items, changes in accounting policies and estimates. ओवरव्यू लिख लेना. स्क्रीनशॉट 1 से शुरू कर रहे. एक काम करो, स्क्रीनशॉट 1 आप लोग है ना 1.5 के स्पीड से भगाओ, तब लिख लेना. ये 9 बजे 9 o'clock को सेशन आफ्टर द ब्रेक शुरू हुआ था. पॉज कर करके लिख लेना. स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 2, स्क्रीनशॉट 3. ओके, बाद में लिख लेना. नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू यू एक्सप्लेन यू net profit or loss for the period. Net profit or loss for the period. So we are going to understand some items in P&L, extraordinary item, prior period item, and changes in accounting policies and changes in accounting estimates. ठीक है. अभी पहले हम लोग आते हैं. What is net profit or loss for the period? Let's understand. Net profit or loss for the period. All incomes and expenses which are recognized in a period. Period means what? 1st April to 31st March. Normally. Should be included in determination of net profit or loss for the period. Yes. करेक्ट है. यस, हम लोग इसको सब लिखते हैं बेटा. ये स्क्रीनशॉट 2 ले लो. याद रखो, स्क्रीनशॉट 2 डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है ये. यस बेटा, नो फिगर्स आर गोइंग टू चेंज. शिवांगिनी जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. शिवांगिनी बोल रही है कि नो फिगर्स आर गोइंग टू चेंज. नो बेटा, नो फिगर्स आर गोइंग टू चेंज. ठीक है. नेट प्रॉफिट और लॉस मतलब क्या? नेट प्रॉफिट और लॉस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. Net profit or loss is divided in 2 parts. Ordinary activities. Activities which are undertaken by an enterprise as a part of its business and such related activities. Beta, ratta maar, by heart, memorize. Ordinary activity, activities which are undertaken by enterprise as a part of its business and such related activities. You can divide this answer. Activities which are undertaken by an enterprise as a part of its ordinary activities of business and such related activities. बेटा मैं इसके कुछ स्टूडेंट्स के वीडियोस होते हैं कि जो बच्चे बेटा बोल के बताते हैं पूरा का पूरा एज इट इज, विच विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस. तो ये मेरे चैनल पे डाल दूंगा मैं, तो उसमें आपको ध्यान में भी आ जाएगा. ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ये सब आपको याद रखना है. यू हैव टू रिकॉल ऑल दिस थिंग्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, इनकम और एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स or transaction which are clearly distinct, red pen, from ordinary activities. It's called as extraordinary activities. याद रखना है ये. You have to recall this. रट्टा मारे दोनों भी.
Screenshot 3. तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब जो डेली लाइफ में आती है आपके, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अर्थक्वेक इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सर एक्सेप्शनल इज वे डिफरेंट. हाँ, एक्सेप्शनल इज डिफरेंट. And what about exceptional? Now you have to write only this box. Screenshot 4. Exceptional means items from ordinary activities which are of such nature that they require separate disclosure. They require separate disclosure. Write down. Sorry, screenshot. Chalo. Ordinary activities, but which requires separate disclosure. This is not as per AS5, but only for better understanding. We are AS5 ऐसा कुछ नहीं बोलता है, exceptional in nature. It is only for your conceptual clarity. आज के लिए मैं इतना ही बनाया था. हाँ, now I will tell you कि आपको याद क्या रखना है. Yes, ठीक है. अभी आज मैं आपको how to read from your study material and how to prepare notes, ये मैं आपको समझा रहा हूं. देखिए, see, it's very important that you must understand how to read the study material. See, first, before starting study material reading, introduction, first make sure net profit or loss for the period. What are headings given by the ICI? Prior period items, changes in accounting estimates, and changes in accounting policies. So this standard is basically divided in, these are the overview of this standard. So sir, overview कैसे बना लेते हो? ये है. पहले तो मैं स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस करता हूं कि what is given in the standard. Okay, while studying any standard, first focus what is there in the standard, then ICI material. The objective of AS5 to prescribe the classification and disclosure. Classification and disclosure, underline. I will show you कि ये standard को read कैसे करने का next 20 minutes. I know this is a boring part. किसी ने explain किया तो it will be easy. But beta, in theory subject, many students, they are not understanding कि sir how we should read the theory without help of any faculty. Faculty का help लिया तो it's okay. But beta, other than faculty's help, मैंने क्या करना चाहिए? Classification and disclosure of certain items in P&L, so that all enterprise prepare and present such statement on uniform basis. So P&L on uniform basis, that is the main objective. They enhance the comparability of the financial statement of an enterprise over the time with the financial statement of other enterprises. So it enhances the comparability. Underline here. According to AS5, requires the classification on disclosures of extraordinary item. अभी ये जरूरत नहीं है because ऊपर ही है. Prior period items and disclosure of certain profit or loss from ordinary activities. ये हम लोग आगे सीखेंगे. It also specifies the accounting treatment for changes in accounting estimates and disclosures of changes in accounting policies. This statement does not deal with tax implication of extraordinary items. Not deals with tax implication of extraordinary item, prior period items, changes in accounting estimate, and changes in accounting policies. Tax implication. बस इतना याद रखो.
नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. यस, इतना ही अंडरलाइन किया. नेक्स्ट टाइम मेक श्योर व्हेन यू आर रीडिंग दिस स्टैंडर्ड, ऊपर ऊपर का रीडिंग करना है. क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ P&L यूनिफॉर्म बेसिस पे एनहांसेस कंपेरेबिलिटी, बस. एंड डील्स विथ, नॉट डील्स विथ टैक्स implication. Net profit or loss for the period. All items of income and expenditure which are recognized in the period should be included in the determination of net profit or loss for a period unless an accounting standard requires or permit otherwise. ठीक है. Included. Income and expenditure must be included in the determination of net profit or loss. तो income and expenditure को आपको include करना है while calculating net profit or loss. The net profit or loss for the period comprises the following components, each of which should be disclosed on the face of P&L. Each disclose on the face of P&L. ये important है. Profit or loss from the ordinary activities. Any activities which are undertaken by the enterprise as a part of its business and such related activities in which the enterprise engages in furtherance of incidental to or arising from these activities. For example, profit or loss on merchandise, मतलब goods बेचना लेना. Loss on sale of unsold inventory at the end of the season. Regular activity. Extraordinary, clearly distinct from the ordinary activities. The nature and amount of such extraordinary items should be separately disclosed in the statement of P&L in a manner that it impacts on current P&L can be perceived. तो आपको ये separately record करना है. Whether an event or transaction is clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise is determined by the nature of the event, or transaction in relation to which business ordinarily carried on by the enterprise rather than by frequency. Yes, such events are expected to occur. Okay. Therefore, an event or transaction may be extraordinary for one enterprise, but not so for another enterprise. Event or transaction may be extraordinary for one enterprise, not for other. For example, losses sustained as a result of earthquake may qualify as extraordinary item for enterprise. However, claims for the foreign enterprise for that. देखो, हमारे लिए अर्थक्वेक होना ये बहुत आम बात नहीं है. It is extraordinary item. But for insurance company, it is ordinary item. Understood? Yes. Examples or events, transactions that gives rise to extraordinary items. Examples. Attachment of property of the enterprise. Attachment means बेटा गिरवी रखा हुआ asset उसकी जप्ती करना. Attachment means जप्ती करना. So it is sealed by the bankers or loan जिसने लोन दिया है. Okay, who disbursed the loan, he attach your property due to non-repayment or even income tax वालों ने seal किया. So that is attachment of your property. Earthquake. So see, these are some examples of extraordinary item and you have to disclose it separately. What is the importance of this standard? You have to disclose extraordinary items separately. ये standard का meaning है. Okay? अरे समझे? ठीक है. Exceptional items. When items of income and expenses within profit or loss from the ordinary activities are such size, nature, or incidence
that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, and nature and amount of such should be disclosed separately. Items such size, nature or incidence. Disclosure is relevant. The nature and amount should be disclosed separately. ऐसे आइटम्स जो साइज वाइज और नेचर वाइज और इंसिडेंस वाइज ये अलग है. साइज वाइज मतलब अमाउंट इज बिग, तो बेटा यू हैव टू रिकॉर्ड इट सेपरेटली. यू कैनॉट राइट इट एज मिसलेनियस. आप इसको मिसलेनियस में नहीं बता सकते हो, ये याद रखो. सर एग्जांपल्स. रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज WDV पे एंड रिवर्सल देयर ऑफ, मतलब कॉस्ट और एनआरवी विच इज ओवर एंड एनआरवी कम्स डाउन, तो ये भी एक्सेप्शनल है. रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज मतलब इंटरनल रिस्ट्रक्चर होगा तो कॉस्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कॉस्ट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग. डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, disposal of long-term investment, legislative changes, litigation settlements, and other reversal. So this A to G, Rattamar, by heart this definition. Easy है. Written down value, restructuring, disposal of fixed asset, disposal of long-term investment, legislative changes, litigation settlement, and other reversal of provisions. बेटा स्टैंडर्ड मुश्किल है, पहले ही बोल देता हूं, बट समझाने के बाद इट्स वेरी सिंपल. After understanding better, it's very simple. Restructuring. Restructuring है, reconstructing कहाँ है? Yes, NRV पे या आपके ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रहे तो आपने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कुछ कॉस्ट दिया, आपने आपकी फिक्स एसेट बेची तो उसका प्रॉफिट और लॉस सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं हम लोग. हम लोग मिसलेनियस इनकम करके रिकॉर्ड करते क्या? नहीं 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 सर. सर हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो उसका प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं. लेजिस्लेटिव चेंजेस, लिटिगेशन में, यस. ठीक है, स्टैंडर्ड इजी लगा? मॉड्यूल में से भी पढ़ के इजी लग रहा है? वन स्टैंडर्ड आई शोन यू बाय पीपीटी वे. वन स्टैंडर्ड बेटा मैं आपको जानबूझ के आई एम गिविंग यू हाउ टू रीड आंसर्स फ्रॉम ICI मटेरियल. यू मस्ट लव अवर मटेरियल. देखो हार्डली टेक्स सम टाइम. देखो कितना टाइम लेता है स्टैंडर्ड को याद करने को. यस, इजी छे. So we have covered ordinary, extraordinary, and there is no exceptional as such word. See, exceptional item ऐसा word नहीं है. No such term as exceptional item in AS5 and Schedule 3. However, the same has been used for better understanding. Yes, बेटा. सो तीनों इजी हो गया. एक जानबूझ के मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं. यस, बिकॉज यू मस्ट नो हाउ टू रीड योर स्टडी मटेरियल. चलो, प्रायर पीरियड आइटम्स. प्रायर पीरियड आइटम्स. लेट्स अंडरस्टैंड लास्ट पार्ट. प्रायर पीरियड आइटम्स आज का लास्ट पार्ट बेटा. आज में फर्स्ट डे है, so I will leave you early because already you have to write many things. Screenshots बहुत सारे लिए आपने.
बिकॉज आपके पेशेंस भी अभी आज के दिन में बेटा दो स्टैंडर्ड्स आप खत्म करोगे फर्स्ट डे पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई विल टेक ओनली प्रायर पेड आइटम्स. बट नेक्स्ट टाइम मेक श्योर बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ऑल्सो. एक घंटे के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ A7. सो डोंट मिस नेक्स्ट सेशन. कुछ भी होने दो, नेक्स्ट सेशन को मिस मत करना बेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज A7 इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो आपको वो समझाना पड़ेगा पूरा. आज कुछ डिफिकल्ट लगा क्या आपको टुडे? एनीथिंग यू फाउंड वेरी डिफिकल्ट? चलिए, प्रायर पेड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस. ओके बेटा, देखेंगे. प्रायर पेड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस विच अराइज इन करंट पीरियड. इनकम और एक्सपेंसेस which arise, break the sentence, in current period, which arise in the current period as a result of error or omission in one or more prior period. पिछले इसके गलतियां, लास्ट ईयर की गलतियां, नाउ यू अंडरस्टूड इन द करंट पीरियड, one or more prior period. So income and expenditure which arise in the current period but results or errors or omissions of one or more prior period. Errors may occur as a result of mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policies, misinterpretation of facts or oversights. मैथमेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती है, पॉलिसीज अप्लाई करने में मिस्टेक हो सकती है. मतलब हमें WDB SLM में नहीं, वो पॉलिसी नहीं है, FIFO LIFO, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स हो सकते हैं. गलतियां इंसान से ही होती है. अल्टीमेटली all mistakes are by human being and you can rectify it, but you have to group it separately. It should be separately disclosed in P&L. P&L में prior paid items, you have to record it separately. Okay, so this is P&L disclosure. Ordinary activities you will record separately. Exceptional items you will record separately. Extraordinary activities you will record separately. Prior period items you are going to record separately. Okay, so prior period items are normally included in the profit or loss for the current period. Alternative approach is to show these such items in the statement of P&L after determination of current net profit or loss. So alternative approach after determination of current net profit or loss. In either case, the objective is indicate of the effects of such items of the current profit or loss. Now today's homework, you will read estimates and you will read policies. Two concepts. We have covered two parts. We covered net profit or loss for the period. This part we covered, which are divided in three parts: ordinary, exceptional, and extraordinary. And we have finished with the prior period items. And now it's your duty to complete accounting policies. You will do that. I hope you understood this accounting standard. Let's quickly revise this. Whatever you studied today, हमें जल्दी से याद रखना है. Yes, बेटा, आज हमने क्या क्या किया देखो. Adjusting and events occurring after balance sheet date. Those events which are significant, which are favorable or unfavorable, and this arise between the balance sheet date up to the date of approval. Significant events, then yes beta, diagram ko yaad karo. Adjusting and non-adjusting. Adjusting means assets and liabilities are altered when conditions are existing on the balance sheet date and additional evidence you get after balance sheet date up to the date of approval. We need adjustments. We are going to pass entry. Non-adjusting event, we will just disclose it. That is non-adjusting event. Okay, it is occur after balance sheet date, significant events, and before date of approval. Next one. Next kya tha? Dividend. Dividend we never record, we write it entry, we write it only in notes to accounts.
and going concern concept, if your enterprise existence or substratum is in danger, in that case, beta, you are going to follow liquidation basis and not net historical cost basis. Then beta, we have solved as 5 net profit or loss for the period, which is divided in ordinary activities. Ordinary activities, beta, day-to-day activities. Extraordinary, apart from ordinary, that is earthquake or your attachment of the property. And then exceptional, which is size, amount, nature, beta, they are not ordinary, then beta, this is exceptional, for which we have to record it separately. Prior period items, current year mistakes, past period mistakes, you found it in current year, it is called as prior period. It is also disclosed separately in P&L account. So beta, here we have finished with net profit or loss for the period, but we left with accounting policy and accounting estimates. I hope today's accounting standard session, I made it very beautiful and you guys better enjoying this. But today's homework is lot of homework, almost 2 hours का homework है, तो आपको पूरा finish करना है. All screenshots you have to write this, and next time better we'll start with S7. I hope S are very interesting. और आज हमने देखे थे डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड एक देखा और एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग भी देखा. S4 अकाउंटिंग था और S5 डिस्क्लोजर था. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद. मिलेंगे ऑन थर्सडे.